तो और क्वेश्चंस देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट पास्ट पेपर क्वेश्चंस फॉर रिएक्शन काइनेटिक्स. ओके, सबसे पहले डिड्यूस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू CH3CHO. ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, नहीं था? Did we do this one? इथेनॉल एल्कलाइन. ओके, ये वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है. तो लेट्स टेक द आंसर 1 2 और 8. We did this in the first class. इसी का जो आगे वाला पार्ट है मैं वो लेता हूँ कि ये रेट हमें पता है. वी नो द रेट. सो लेट्स गो टू द मैकेनिज्म. इसने आपको 3 स्टेप्स दिए हैं और सो यूजिंग अ रेट इक्वेशन इन पार्ट 3. जो रेट इक्वेशन हमने अभी निकाली थी इन द प्रीवियस पार्ट्स, उसको यूज करते हुए द क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि कौन सा मैकेनिज्म का कौन सा स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. आसान तरीका हमने क्या लिखा हुआ है कि जो रेट इक्वेशन में हमारे पास चीजें आ रही हैं, दे शुड बी द वन that should be on the reactant side of the rate determining step. So which step do you believe is the rate determining step? First, एक दफा उसमें हमारे पास इथेनॉल आ रहा है and we are having OH minus on the reactant side. ये बन जाएगा जब, तो फिर ये इंटरमीडिएट दोबारा इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके एक और इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर वो वाटर के साथ मिलकर हमें फाइनल प्रोडक्ट देगा. इज दिस क्लियर? So the first step is the rate determining step. Class. Let's have a look at this question. This is November 17, 4-2. Okay, the reaction between ClO2 and F2 is shown. The rate of the reaction was measured at various concentrations of the two reactants, and the following results were obtained. The rate equation is this. Rate is equals to K, ClO2 and F2. What is meant by the term order of a reaction with respect to a particular reagent? Yes. Power of the concentration of the reactant to which the rate is proportional to. Very good, that's perfectly fine. ये वाला तो आसान पार्ट था हमारे पास. Okay. Then the question is telling you use the results of experiment 1 to calculate the rate constant K for this reaction. Include the units of K. Can you do that? करो जरा इसको जल्दी से शाबाश. Rate is equals to K, ClO2 and F2. So rate will be taken as 2.2 exponent minus 3K. I don't know, concentration is 0.01. Did we do this question or not? Let's do it again. So what is the value of K? .67. And what are the units? What is the unit? Is बचे
Is this clear? What are the units for K? Mole minus 1, dm cube, S minus 1. Perfectly fine. Use the data in table to calculate the rate of experiment 2. Again, I know the value of K, the rate constant will be the same. And what will be the concentration of ClO2? And concentration of fluorine is 0.06. So what is the rate then? We can either use the rate equation or we could have also done it without the rate equation. If you would have seen अगर ClO2 इतने times बढ़ रहा है तो rate भी उतने ही times बढ़ेगा. दोनों तरीके से इस काम को किया जा सकता है. 5.51 exponent minus 3. ClO2 in experiment 3. Exactly using the equation. Rate is 7.04 exponent minus 3. ClO2 I don't know. And what about fluorine? 0.04. Yes. So what is the concentration of ClO2? Zero point 0.02. Okay, what is meant by the term rate determining step? चौर आ रहा है तो बताओ. बोलो बोलो क्या है? 0.4 डिसाइड कर लो. So what is meant by the term rate determining step? कौन सा होता है rate determining step? The slower one जिसके reactants rate equation में पार्ट लेते हैं, सही ना, जिसके reactants are a part of the rate equation. अब इस तरह के सवाल आते हैं आपके पास and you need to tell कि कौन सा वाला step 1 है कौन सा वाला step 2. There are many ways to do this. Suggest आता है, the student से sir how would we know, हम कैसे करेंगे, कौन सा वाला है, क्या है, कैसे होगा, आप खुद भी कर सकते हैं. अब 2 दफा ClO2 involved है. Suggest whichever question says suggest, that means जरूरी नहीं है वो आपके सिलेबस में आपने पढ़ा हो, but using the knowledge of the topic you have to suggest how this can happen. Suggest करो, सही है ना. तो क्या होगा, आप suggest करेंगे how will this happen, क्या इसका 2 step reaction होगा. So one suggestion is that ClO2 and F2 should be involved in the first step, because अगर हम first वाले को slower कहेंगे, so both of these would be involved in the rate equation और दोनों एक ही दफा involve हो रहे हैं, both have the power 1. Once the product is formed, कोई भी product हम बना सकते हैं. ClO2 F2 आपने बना ली, that's fine. बस ये product अगर बनाओ तो ये भी चाहो तो बना सकते हो. अब the same thing reacts with ClO2 and it gives you the final product. वापस ये intermediate और एक और दफा ClO2, because ClO2 had to come twice. And which step is the rate determining step or the slower step? The first one. Step 1 is the rate. Is this clear? Have a look at this question. Same question. Okay, so you believe step 1 में सर एक ही दफा होना चाहिए NO और
बिल्कुल दोनों के रिस्पेक्ट से ऑर्डर 1 है. सो व्हाट प्रोडक्ट डिड यू गेट? NOF2. अच्छा, इसमें मैं NOF2 क्यों नहीं सजेस्ट करूंगा? इसमें देयर इज अ वेरी स्मॉल, लिख सकते हो सजेशन, मैं बिलीव शायद एक्सेप्ट हो जाए, बट आई विल नॉट रेकमेंड दिस हियर. वहां तो सर आपने कुछ नहीं कहा. वाई वहां कुछ नहीं कहा? वहां पे आई विल बिलीव दैट द सेंट्रल एटम इज क्लोरीन. Chlorine is a period 3 atom. Period 3 atoms can expand their octets. Period 2 के बारे में आपने octet expansion नहीं पढ़ा. इतनी छोटी सी बात है ये इसकी जिसमें लिंक अप कर सकती है दिस सजेशन. लिख सकते हो सजेशन में, शायद एक्सेप्ट हो जाए, बट इसमें आई रिकमेंड यस. समझ आई बात? वहां पे क्लोरीन इन्वॉल्व था, तो आई विल नॉट रिकमेंड दैट. और फिर दोबारा अगेन आई हैव अनदर NO plus F and it will give me NOF. हाँ, तो दो हो गया ना, एक पहले वाले में आ गया, पहले वाले में NOF आ गया. कंबाइन बोथ ऑफ देम, बोथ द इक्वेशन, बोथ द स्टेप्स. इज दिस क्लियर बेटे? Okay, class, this question concerns with the graph. So have a look at it and how will we attempt this one. Chromium hexacarbonyl undergoes the following ligand replacement reaction. We will study ligand replacement once we deal with transition elements. Right now, we're just concerned with the reaction kinetics. Two separate experiments were carried out to study the rate of this reaction. In the first experiment, there is a ligand large in axis and CrCO6 was measured with time. The results are shown on the graph. Okay. Then what have they done? In the second experiment, CrCO was in large axis and PR3 was measured with time. The following results were obtained: 0, 120, 360. Okay, what do I see? What is the difference here? इन दोनों के बीच में कितना difference है? 0. मतलब 100 से देखो 76, 24 का difference है, फिर 16 का difference है, and then इसका difference है. तो you can just draw the graph with respect to CRO or PR3. Just plot these points और उसको graph and draw the line of best fit through your points. आपने line of best fit बना लिया कि line of best fit क्या होती है? Should be closest to all the points. And जितने points above the line उतने points below the line. Keeping that thing in mind. Okay, now the question says again, क्योंकि graph हम अभी बना नहीं रहे हैं, but the first one, I expect you to tell me the first one. Use these graphs to determine the order of reaction with respect to CrCO taken 6 and PR3 in each case. Explain how you arrived at your answer. Which graph do I have? This is a concentration time graph, right? The gradient can tell me the rate. One thing I know for sure that it is a curve, right? तो ये first order तो नहीं है, right? It's either sorry, zero order नहीं है. It's either first order or how do I identify that it's first order or second order? Half life. Half life कैसे देंगे? I know 0.01 से 0.05 concentration होने में कितनी देर लगती है? 0.005, sorry, 1 2 3 4 5. ये concentration होने में what time does that take? कितना टाइम लग रहा है? What is the time that is taken? Around 700 seconds. So अगर 0.005 से मैं 0 से भी आधा कर दूं, and you could have taken any other two values as well, 0025 तक. कितना टाइम लग रहा है अगेन? What is the time taken then?
द टाइम इज ऑलमोस्ट द सेम, प्रॉपर ग्राफ पे हम करेंगे तो हमारे पास बेटर आंसर आ जाएगा. बट द टाइम half life is consistent, right? So order with respect to CRCO taken 6 times is very good. So order लिख लेते हैं. दूसरे वाले का ऑर्डर आई विल प्रोवाइड यू, क्योंकि वो ग्राफ अभी हमारे पास नहीं है. सही है. आई विल प्रोवाइड यू द ऑर्डर. उसके हिसाब से ऑर्डर हमारे पास 0 है. व्हेन यू मेक अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट तो स्ट्रेट लाइन आएगी, और स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि वो कौन सा ऑर्डर है. ऑर्डर इज 0 विद रिस्पेक्ट टू PR3. ओके, नाउ मूविंग ऑन. PR3 से ऑर्डर 0 है. कैन यू राइट द रेट इक्वेशन? इसकी रेट इक्वेशन लिखकर दिखाऊंगा. क्या बनेगी बच्चे इसकी रेट इक्वेशन? रेट इज इक्वल्स टू K CR CO6, because PR3 से order is 0. Okay, state the units of the rate constant. Can you tell me the units of the rate constant for this one? Second minus 1. Okay, now comes the main part. Very good. The order with respect to PR3 is 0. So PR3 should not be on the reactant side of the slower step. तो VF को पहले हमने कहा कि भाई T नहीं हो सकता, इसमें स्लोअर स्टेप में रिएक्टेंट पे PR3 आ रहा है. C भी नहीं हो सकता, शुरू में ही रिएक्टेंट स्टेप में PR3 आ रहा है. A और B में से देखा. In part A, PR3 is on the reactant side of again the slower step. सही है. PR3 should not be on the reactant side of the slower step, क्योंकि रेट इक्वेशन में वो इन्वॉल्व नहीं है हमारे पास. So this is the mechanism is D. Is this clear? अच्छा, अगर मुझे रेट and calculate a value of the rate constant using the method of initial rates or any other method you prefer. How will we calculate this rate constant? ये चीज मिस हो गई थोड़ी सी हमसे. कैसे कैलकुलेट करेंगे रेट कांस्टेंट? If I just have this graph, how do I calculate the rate constant? बताओ. इसका ग्रेडियंट. बिल्कुल, पहले रेट निकालेंगे. बिल्कुल इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे we'll draw a tangent ड्रॉ करेंगे, and we'll find the gradient of this tangent, right? बिल्कुल starting point पे carefully looking at the curve, we'll draw a tangent and we'll use the 2 points on these tangents to figure out the rate. कोई भी दो quantities हम लेंगे, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Points मैं आपको बता देता हूँ, 2 points लेके कर लो आराम से. The easier smarter way, अगर आप अपनी रीडिंग से ग्राफ को सही रखना चाहते हैं सो आप एक लाइन बनाएं और उसको बिल्कुल एंड तक ले आए. तो हाउ विल दैट हेल्प? इनिशियल रेट निकाल के देगा, रेट कांस्टेंट नहीं देगा. रेट कांस्टेंट तो हम निकालेंगे, राइट? दोबारा बोलो, सॉरी. वो रेट देगा, वो रेट देगा. फिर यू उसने कहा है ना, व्हाट इज द क्वेश्चन स्टेट, दोबारा देखते हैं. हाँ, इक्वेशन में पुट करके हम इनिशियल, नहीं 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 नहीं. अच्छा, अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू अ गुड ट्रिक टू अंडरस्टैंड दिस. आप बिल्कुल स्टार्टिंग में टेंजेंट बनाए एंड एक्सटेंड इट टू द एक्स एक्सिस. इससे क्या होगा, बीच में कोई पॉइंट नहीं रीड करना पड़ेगा, आसानी से पॉइंट्स रीडेबल आ जाएंगे. एक पॉइंट ये आ गया, लिख लो. कितना होगा ये? 1000.
1020 comma 0 and this is 0.01 comma 0. Find the gradient. मुझे बताओ रेट कितना आ रहा है इसका. Rate is found through the gradient. y2 minus y1 is 0.01 minus 0. नेगेटिव ग्रेडियंट लेते हैं बेसिकली नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे. दिस इज 1020 minus 0 तो just put both of them. What is the value of rate? ये रेट में रख लो. ये निकालना है. What is the concentration of CrCO6 that you will take? Initial हम rate ही इस point पे निकालें. Just because we have extended the line doesn't mean that we have found the rate anywhere else. This rate is the initial rate. बिल्कुल starting वाला rate है ये. Is this clear? Figure out the value of K. हम्म 0.01 मल्टीप्लाई हो रहा है. वहां जाएगा तो आगे क्या है. 9.8. दैट्स इट. आगे कोई वैल्यू नहीं है. 0 के आगे क्या है. ओके तो 9.8 0 एक्सपोनेंट और यूनिट्स हमने अभी अभी फिगर आउट कर दिए पर सेकेंड. इज दिस क्लियर? ऑन विच वन डिड वी हैव. कौन सा मैकेनिज्म था हमारा. पी वाला मैकेनिज्म. इज दिस क्लियर? Yes class, let's do another question. The reaction between iodine, write this reaction down क्योंकि हमें बार बार जो है ना इसकी जरूरत पड़ेगी. we'll scroll down तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी. The reaction is found to be first order with respect to methyl ethanoate and with respect to H plus and zero order with respect to iodine. तो अलग से rate equation भी लिख लो. So what do you understand by the term order of the reaction? अब विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट नहीं पूछा. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा अगर मैं आपसे ओवरऑल ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहूं तो. अगेन द पावर. अगर आप कहेंगे तो अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहेंगे तो आप क्या कहेंगे. सम ऑफ द पावर ऑफ द concentration of the reactants. Construct the rate equation for the reaction. What will be the rate equation for this one? K and H plus दोनों के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है ना. okay. Okay, the following sketches shows 3 ways in which the concentration of reactant might vary during the reaction. अब वो आपसे इथाइल एथेनोएट नहीं था, मेरी गलती है, सॉरी. यहाँ पे प्रोपानोन है. अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाहि. ओके प्रोपानोन है. The following sketches shows 3 ways in which the concentration of reagents might vary during the reaction. Which of the above graph correctly describes how the concentration of reactant changes with time for the propanone concentration? प्रोपानोन के हिसाब से ऑर्डर क्या है. फर्स्ट है. ये रिमेंबर पहले ग्राफ के एक्सिस देखा करो. कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है. फर्स्ट ऑर्डर है. कैसा होना चाहिए. आसान चीज. इसका ग्रेडियंट क्या बताएगा. चलो व्हाट डज द ग्रेडियंट टेल. रेट बताएगा. वेरी गुड. एज प्रोपानोन विल बी कंज्यूम्ड अप विल द रेट चेंज because the rate depends on the concentration of propanone. So as propanone will be consumed up, the rate will change. So the gradient must change. Propanone का कौन सा होगा. A. Very good. What about iodine. Why not C. तो जीरो ऑर्डर है तो क्या हुआ.
यू राइट, इट जीरो ऑर्डर, तो सी क्यों नहीं हो सकता? वेरी गुड, आयोडीन हैज टू बी कंज्यूम्ड अप सर। आयोडीन इस्तेमाल होगा, आयोडीन जब इट विल बी कंज्यूम्ड अप एंड इट विल बी यूज्ड इन द रिएक्शन, इट्स concentration is bound to decrease. सो सी नहीं हो सकता, द आंसर विल बी बी फॉर आयोडीन, और उससे रेट पे इम्पैक्ट नहीं होगा। इज दिस क्लियर? ओके ओके, when carried out in 0.1 mole per dm cube HCl solution, the rate was found to be 0.002. Predict the rate of reaction in 0.2 mole per dm cube and 0.3. 0.2 पे रेट क्या हो जाएगा जरा मुझे बताओ। फर्स्ट ऑर्डर है, मेरे HCl कहाँ से आया सर? HCl कहाँ है? कहीं HCl नजर आ रहा है यहाँ? कैटलाइज्ड बाय हाइड्रोजन आयंस H प्लस, H प्लस HCl बता रहा है, राइट? सो क्या होगी इसमें? 0.1 है, 0.1 concentration में रेट इज 0.002. व्हाट अबाउट व्हेन इट इज 0.02? कहाँ लगेगा पॉइंट? क्यों? डबल हो जाएगी क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर है। व्हाट अबाउट 0.3? हम्म, 0 पॉइंट, राइट, एंड ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ओके, तो रेट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ इसी तरह बनेगा फॉर जीरो ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H प्लस, राइट? y इक्वल्स टू mx वाला ग्राफ होता है, पहले भी बता चुका हूँ। ओके, अब जो असल बात है हमारी, दैट काइनेटिक्स। द मैकेनिज्म, H plus और प्रोपानोन मस्ट बी ऑन द रिएक्टेंट साइड ऑफ अ स्लो स्टेप, राइट? तो पहले हमने देखा किसके स्लो स्टेप में प्रोपानोन और H प्लस रिएक्टेंट साइड पे हैं। एक ही बचा घूम फिर के हमारे पास, बी, एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप, राइट? बी इज द answer, and the reason is that the order is the first with respect to propanone and H plus. They must be on the reactant side of the slower step, and slower step is the rate determining step. Okay. Again, figure out the order of the reaction. This question is from June 1943, question 5. June 1943, question 5. Chlorate ions undergo the following reaction under aqueous conditions. A series of experiments was carried out at different concentrations, ClO minus and NH3, or ClO minus and NH3. The table shows the results obtained. Use the data in the table to determine the order with respect to each reactant. Chlorate and ammonia. Show your reasoning. What do we want? How do we intend to do it? ऐसे दो सेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं, कोई एक चेंज हो रहा हो और दूसरा कांस्टेंट हो। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड ले लूं, इफ आई टेक द फर्स्ट एंड द सेकंड, क्लोरेट कितने टाइम्स हो रहा है? दोनों चेंज हो रहे हैं, बल्कि पहले लेट्स फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया, पहले ढूंढ लेते हैं। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड में विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया देखते हैं। अमोनिया कितने टाइम्स बढ़ रही है? हाउ डू वी फाइंड इट? टेक हायर डिवाइडेड बाय लोअर। तो अमोनिया कितने टाइम्स बढ़ रही है? 2 टाइम्स। ऑर्डर कितने टाइम्स बढ़ रहा है? 4 टाइम्स। अमोनिया 2 टाइम्स बढ़ रही है, सो टेकिंग experiment 2 and 3, NH3 टाइम्स 2 हो रही है, और रेट जो है वो टाइम्स 4 हो रहा है, तो ऑर्डर
इज 2 विथ रिस्पेक्ट टू, नहीं अब मैंने क्या बात बताई थी, हमें पता इसका इम्पैक्ट पता है, वी नो द इम्पैक्ट ऑफ अमोनिया, राइट? सो लेट्स कंसिडर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड वाले को देख। एंड व्हाट इफ एक एक्सपेरिमेंट में आपको पहले आसानी से बता देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड में अमोनिया कितने टाइम्स हो रही है? मैं एक एक्सपेरिमेंट 4 आपके लिए बना देता हूँ। एक्सपेरिमेंट 4 बना देता हूँ, जिसमें आई टेल यू कि अगर क्लोरेट नहीं बढ़ रहा होता, सिर्फ अमोनिया बढ़ रही होती, तो रेट पे क्या इम्पैक्ट आता? कैन यू टेल मी? मैं 1 और 2 को देखना चाह रहा हूँ, बट इसमें दोनों चेंज हो गए, राइट? तो मिस आई एम जस्ट लुकिंग एट, अगर सिर्फ अमोनिया बढ़ती तो उससे रेट पे क्या इम्पैक्ट आता? अमोनिया डबल हो गई है। अभी फिगर आउट किया हमने, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो रेट मस्ट बी 4 टाइम्स, 0.256 को 4 टाइम्स करो, 1.024। तो दैट मीन्स अमोनिया का इम्पैक्ट मुझे पता चल गया। नाउ इस एक्सपेरिमेंट 4 और एक्सपेरिमेंट 2 को मैं ले लूं, राइट? अब मेरा क्लोरेट कितने टाइम्स बढ़ रहा है? अगेन मैंने कहा 1 से जब मैं 2 आ रहा हूं तो दोनों चेंज हो गई, राइट और रॉन्ग? आई वॉन्टेड टू सी के 1 से 2 में दोनों तो चेंज हुए, बट आई नो कि अमोनिया का इम्पैक्ट उसमें क्या होगा। अमोनिया के रिस्पेक्ट से ऑर्डर 2 है, तो मैंने कहा व्हाट इफ क्लोरेट नहीं चेंज होता, 0.2 ही रहता, सिर्फ अमोनिया चेंज होती। लुकिंग एट एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, दोनों चेंज हो रहे थे, तो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट बना लिया कि अगर मैं फोर्थ एक्सपेरिमेंट उसको लिख दूं अपने समझने के लिए, एंड मैं कहूं कि सिर्फ अगर अमोनिया डबल हो रहा होता तो रेट क्या होता। ये तो मुझे अमोनिया का इम्पैक्ट तो पता है, तो रेट इतना हो जाता। नाउ लुकिंग एट एक्सपेरिमेंट 4 एंड एक्सपेरिमेंट 2, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है बताओ? सिर्फ क्लोरेट चेंज हो रहा है, तो रेट क्लोरेट, क्लोरेट कितने टाइम्स बढ़ रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है हमारे पास, राइट? हायर डिवाइडेड बाय लोअर, और रेट भी कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे? ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू, लिखते जाओ उसको बेटे, इज दिस राइट? समझ आइए बात? कभी कभार जब दोनों नहीं हो रहे तो पहले हम जिसका निकाल सकते हैं उसका निकाल के खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डेटा बनाते हैं, जिसमें कोई एक चेंज हो रहा हो और उसका इम्पैक्ट से रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वी कैन फिगर दैट आउट, और उसके बाद हम काम कर सकते हैं। ओके, पार्ट 2 एंड 3, इसकी रेट इक्वेशन बनाकर दिखाओ मुझे। व्हाट इज द रेट इक्वेशन फॉर दिस वन? रेट इज इक्वल्स टू के क्लोरेट, और what is the overall order of this reaction? Can anyone tell me? Very good. Overall order of the reaction is 3. Okay, now this is the rate equation. And now how will you calculate the rate constant? कोई भी एक set of data ले लो, कौन सा वाला लेना है? जो दिल करे। Rate is 2.05 K, chlorate की concentration 0.4, अमोन जिसकी जो हो उसको वहीं प्लग इन किया करो, स्पेशली जब ऑर्डर्स अलग अलग हो स्क्वेयरिंग वगैरह में, ताकि कोई एरर ना आए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? लिख के करो, वैल्यू और यूनिट दोनों जरा बताओ मुझे। Hmm? Again, I'm trusting you with the values. What about units?
यस बचे। मोल -2 DM6 second -1, that's fine. ओके इसका ग्राफ देखते हैं। हाउ डज रेट कांस्टेंट इंक्रीज विथ टेम्परेचर। ये तो हमें पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ती है तो ये रेट कांस्टेंट ए ई एक्सपोनेंशियल वाला कर्व होता है, बट यू पीपल डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको बनाकर दिखा देता हूँ। रेट कांस्टेंट जब बढ़ता है टेम्परेचर के साथ साथ इस तरह से बढ़ता है, सही है। इस तरह से आप इसको बना लें, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना, कर्व सा बनाना। असल में इट इज अ ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल का भी नेगेटिव पावर रेसिप्रोकल, इस तरह का ग्राफ होता है, सही है ना। समवॉट लाइक दिस, लेकिन हम अगेन स्केच बनाना है हमें। दिस इज इनफ। रेट कांस्टेंट वी नो बढ़ता है विद टेम्परेचर। Okay class, let's do the next two parts. Okay. In another experiment, a reaction between chlorate ions and iodide ions in aqueous alkali was investigated. A solution of iodine in aqueous alkali was added to a large excess of chlorate ions, and I minus was measured at regular intervals. Describe how the results of this experiment can be used to confirm that the reaction is first order with respect to I minus. बताओ कर क्या रहे हैं? What data are you collecting from the reaction? Yes. What data are you collecting from the reaction? The iodide concentration. रिएक्शन चल रहा होता है, बीच बीच में से थोड़े थोड़े सैंपल निकालते रहते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, और फिर छोटे छोटे सैंपल्स को जो हम निकालते हैं वो टाइट्रेट करते हैं। वी डिड इट इन एएस लेवल एज वेल। रिएक्शन काइनेटिक्स में हमने समझा था, रिएक्शन कंटिन्यू हो रहा था, जो भी रिएक्टर उसमें थोड़ा सैंपल निकाल लिया, थोड़ा सैंपल निकाल लिया, सैंपल्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम सेट कर देते हैं, और फिर उन सैंपल्स को टाइट्रेट करके देखते हैं कि आफ्टर इतने टाइम के बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, क्योंकि रिएक्शन तो चलता रहेगा, रोक के थोड़ी देख सकते। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो यू आर गेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड एंड टाइम। सो व्हाट विल यू डू, यू विल रिकॉर्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या हो गया, यू रिकॉर्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरा एंड नोट खुल जाता है, बता रहा हूँ ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड रिकॉर्ड करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड देन प्लॉट अ ग्राफ। कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ आयोडाइड का आ जाएगा, एंड व्हाट विल यू डू, फर्स्ट ऑर्डर कैसे पता करते हैं, क्या कांस्टेंट, half life. We'll plot a graph of the concentration of iodide. So record the concentration of I minus and time and plot a concentration time graph. Find the half lives from the graph. If the half life is constant, the reaction is first order with respect to is this clear? चलो जल्दी से लास्ट टू पार्ट्स करते हैं। ना हमें स्लो स्टेप बताना है इसमें, ना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताना है, कुछ भी नहीं बताना है। ये तीन स्टेप्स को कंबाइन करके ओवरऑल
इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बतानी है, रेट इक्वेशन नहीं कह रहा बेटे, डोंट वरी। कंबाइन करो इन दोनों तीनों को, ऐड करो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, जो चीजें कंसिस्टेंट आ रही हैं वो बता दो। ओके इसमें कोई रेट इक्वेशन का सवाल नहीं है, सिंपल हाफ इक्वेशन का सवाल है। ClO माइनस प्लस आई माइनस HClO हमारे पास कट गया, देखो दोनों साइड पे, OH माइनस भी कट गया दोनों साइड पे, देन व्हाट डज इट गिव अस? Cl माइनस एंड, सही है, तो दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन। रेट के पीछे पड़ गए, जब रेट नहीं भी पूछ रहा तो वाई गोइंग फॉर रेट, राइट? कहाँ पूछ रहे स्लो स्टेप? यू आर राइट, यू आर राइट, इसमें तो वो काम नहीं करना है, इसमें जस्ट रिएक्शन के बारे में आइडेंटिफाइज अ स्टेप दैट इन्वॉल्व्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। कौन से स्टेप में रिडॉक्स हो रहा है हमारे पास, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रही है? वन में हो रही है, किसका किसका ऑक्सीडेशन और नंबर चेंज हो रहा है? द इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना चाहिए, वन में तो किसी का भी चेंज नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर। Cl का यहाँ पे भी +1 है और यहाँ पे भी +1 है। Cl अभी भी क्लोरेट आयन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ना, सो उसका तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। बी में आई माइनस है यहाँ पर, और यहाँ +1 हो गया ये हमारे पास, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया। रिएक्शन बी इज, स्टेप 2 इज अ redox reaction. Why? Because I minus से वो +1 हो गया हमारे पास, iodide has been oxidized and chlorine has been reduced. Iodide has been oxidized in step 2 and chlorine has been reduced. So step 2 is a redox reaction. ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन था नहीं था के चक्कर में नहीं पड़ते हम एक, नहीं नहीं इस तरह तो खत्म, दिस इज ओ लेवल्स, भूल कर आ गए हम। अब हमारा प्राइमरी फोकस गेन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे नहीं, वी आर मोर फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन नंबर्स। सही है बेटे? सो आयोडीन आई माइनस हमारे पास अगर है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। HIO में आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, ऑक्सीजन इज -2, आई इज +1 हो गया, वो तो वो ऑक्सीडाइज हो गया। ClO के अंदर, क्लोरेट के अंदर Cl was +1, अब वो Cl माइनस हो गया। This oxidation state is what we are more focused on. Oil rake oxidation is loss and reduction is gain. ठीक हो गया बच्चे?